Hello, hello. This is the My Artifact episode number 2827. Today's date is 6th of August 2023. It's almost like a morning at 8:35 a.m. Recording Artifact episode in the morning is kind of like a something little bit of fresh, like there is no thought inside of you. Okay, you are actually ready for stuck the thoughts inside your mind, but like in the morning the mind is very fresh if I compare it during the night. Like after the during the night was like recording artifact episode at the night was like your head is actually stuck with lots of thoughts. Okay, like videos has to be edited, thumbnail, title, and not only about the work, but sometimes I just think about the personal life, sometimes think about the some other stuffs too. So lot of things. So usually my mind is very not prepared. Like sometimes it will get prepared, then I talk about artifact episode in some sort of subjective or kind of like something really half an hour or something like a 1 hour. The topic is very interesting, but most of the time I was literally dull during the night, but during the morning I am literally charged. All right, and I wanted to use this kind of like something really charge my brain. I wanted to use this kind of like something really momentum. Okay, yeah. So what exactly is this thing? Like there is nothing really special to say. Everything is kind of like something really normal, nothing really that much special at all. But let me tell you one thing now. I actually created some sort of questions for myself, that personal development questions, and those questions are might be really helpful for me because those questions are related with the personal thing, personal development. How do you do all those things, wagera wagera. And I haven't been talk about since almost like 3 to 4 days about these questions. Okay, and I have 97 questions. And how many questions I completed? I completed, wait, okay, 11 questions I completed. Okay, and there are so many questions, so we just directly jump to the questions. Okay, so question number 12: what are your strength and weaknesses? I already explained these things, strength and weaknesses, in official thing. um, Strength, what is actually the strength of yours? So my strength is that ki, I am not giving up. When I think that ki, I wanted to achieve that thing, I won't give up. And I like my process is a bit really slow. I take baby step, but I will not quit. Okay, and I will do this thing to make sure that thing will be achieved. Okay, but I have to understand this thing ki, is this kind of like a something really essential for me? Okay, like when I realize that ki, is this not really essential, then I just don't really waste my time into it. Like just an example is that ki, I was doing a job for almost like a 4 year, and I realized that ki, I didn't really have any life in there. Okay, yeah, I have started on some sort of earning money and everything is really good, everything is really great, but it's just like that na ki, uh, uh, I thought that I realized that ki, this job is not really, like I can't see my future into this job. So I didn't really quit it. Okay, the COVID came, and but actually after the COVID they actually called me. They says that, hey, do you wanted to join the office and things like that? I say no, I don't want to do it. And yeah, so uh, yeah, but when it's really necessary, like this YouTube is kind of like something really essential thing for me because I see in the future from the YouTube. So so right now I'm not earning any money. I'm doing this YouTube for almost like a past 2 3 year. Okay, and I'm not earning any money. I am almost 30 and everything, but I'm still not give up. Okay, I am constantly uploading videos, as good as possible as video as I can. And yeah, so my strength is that ki, even in the darkness, if I found some sort of light that change my world, I will follow that light. Okay, even if there is a darkness is all around me. So
my strength is not to give up. Okay. And then my weaknesses. What is the weaknesses? All right. So weaknesses is that key, like procrastination. Yeah, procrastination, and something that key, laziness. Laziness, procrastination is the same thing. There is no difference at all. Okay. And um, uh, procrastination, yeah, yeah, only about the procrastination, yeah. Ki, like, yeah, and this is the problem of all. Okay, like basically na, like procrastination is always be like, it's a kind of like something really part of human thing, and you can't really ignore that fact. Okay. Procrastination is always be there. Okay. So yeah, this is my weaknesses. I'm actually trying to overcome that weaknesses, but maybe it will take time. Okay, but I just have to be more focused on the strength. But yeah, weaknesses always be there. Okay, yeah. I don't know how should I, like, I always like, what is exactly the procrastination that I did is that procrastination means like basically now, like I don't know. Like, let me tell you one thing. Yesterday, I completed my project. Okay, last night at 9, at before the lunch, before the dinner, I completed my project and everything, and and I am kind of like a something really good. So I can record my next video. Is that ki car for sale simulator? I wanted to play and I wanted to record that gameplay, but instead of that I watch a movie. Okay, why? Because of that I didn't, I just feel like that ki right now I'm not ready yet. I just feel like that ki I don't know, I just wanted to free time. Okay, so that's why I didn't really record my gameplay and just watch a movie. Okay, but eventually sometimes it's really essential for that. Like कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि your mind requires some sort of a break. Okay, so for that thing, yeah, that is also kind of like a something really essential fact. Next question is that ki, what motivates you? Well, actually, these are the questions I already explained in this artifact episode, or but still, okay. What motivates me? So let me understand. Let me clarify to you. Motivate means kind of like that. Ki, this is the kind of like a feeling that you are actually eager to go to your eagerly wanted to achieve your target. Okay, so that is called motivation. Like uh, yeah, I am motivate. Yeah, what motivate me is like that. Ki, I motivate from lot of things like music, poems. Poems means like there is a poem of father of Amitabh Bachchan wrote that कि संघर्ष का मैदान मत भागो तुम वगैरह वगैरह, all those things. It's something really very beautiful words. Okay. Sandeep Maheshwari, and so many people who are actually some Mr. Beast. Okay, there are so many people are actually motivate me in their act, in their speeches and everything. So I motivate from lot of things. Okay, there is no kind of like something really something really one fixed person that I am bit really motivated, like when I see that person and I'm bit really motivated. No, it's not. Okay, like there is no in front of me, like whatever the people I see that motivate, those are actually behind the screen. So yeah, so there is no one. Okay, and as also I am not believe in motivation. Why? Because of that he, like for me, I don't know about other, but for me motivation is a kind of like a things that I can hold for couple of time and then it's gone. Okay, like basically if I watch the Sandeep Maheshwari lecture and things like that, then I feel really motivated. Yeah, then after that just like yeah, you just like keep doing my work. Okay, like doing work and let me tell you one thing, that your work is kind of like a something really running. Okay, running means like that you have to run 500 meter for less than a minute. Okay, so this is your target and you wanted to achieve that target. So for that, what motivates you? You just have to focus on the things, focus on that, and you just have to run as fast as you can,
so you can achieve your goal less than a minute. All right, but when you have when you wanted to accomplish a goal which takes almost like years of effort, so for that thing motivation speech and everything is doesn't really help you that much. Okay, yeah. So for me is that key, motivation is a kind of a emotions that I have. Like basically, when I see the comedy film, I feel really happy. When I see the serious film, I feel really sad. Okay, so motivation is a kind of like a something really emotion for me, which is happened for a particular period of time and then it's gone. So this is a kind of a thing. All right. So, what are your goals? All right. Well, I have so many goals. I have so many targets to achieve, and I don't want to disclose those things in artifact episode. Why? Because my goals are a bit really kind of like a something really that key out of the line. Out of the line means like that कि right now I am not kind of like a person who says that कि I can achieve that thing. Dude, that is not, as a human can do anything. Yeah, obviously, yeah, as a human can do anything, but as a human can say something like that कि you are actually blabber about yourself that कि like basically कुछ लोग कहते हैं ना, हाँ मैं बुगाटी वेरॉन लूँगा या मैं ये लूँगा वो लूँगा. Like I believe in that कि instead of saying things I just wanted to show things. Okay, कि हाँ मैंने लाइफ में ये किया है, तो मैं मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ. आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट थिंग कि मुझे ये करना चाहता हूँ, या मैं आई जस्ट वांटेड टू कि मैंने ये कर दिया. ओके, दिस इज द काइंड ऑफ लाइक थिंग दैट आई वांट. ओके, but sometimes goal is really essential and I have multiple goals, but right now my goal right now yeah, at this moment there is a one goal I have is that ki I wanted to earn money from the YouTube. Okay, yeah, that is really essential thing for me. Okay, so I'm putting a lot of effort to all those things. Okay, and when I kind of like something really achieve that goal, when I started earning some sort of money, decent amount of money, so that I can build a app. Okay, my artifact episode is a kind of like something really app. Like right now I'm making artifact episode right now. I just wanted to build artifact episode. Like artifact episode is really helped me a lot in everyday life. Okay, and it actually helped me a lot to achieve my goals and things like that. It actually helped me a lot to clear my mind and lots of things. Okay, like basically it actually heal from your inside. So so basically is that ki I wanted to create that artifact episode so that people can record artifact episode. Okay, and and yeah, it's a lot of things. Okay, if you like there is a app now, there is a app, so there is lots of things, but I don't wanted to talk about such thing right now because if I wanted to talk I can talk, and I think about this thing, and I will do that, and then after that there is also a lot of things. So yeah, I have multiple goals, but right now my goal is that ki I wanted to earn money from the YouTube. Okay, all right, next question is that ki what is your biggest accomplishment? I already explained this thing, biggest accomplishment. Dude, yeah, I already explained. What is your favorite biggest accomplishment? Okay, let's talk about biggest accomplishment. Okay, biggest accomplishment is that like accomplishment means like that ki when you achieve something, that is called accomplishment. Okay, but for me is that the accomplishment is that ki I realized that ki I was actually running from really wrong way. I understand that, and I just leave that path, and creating my own path that makes my future really bright. Okay, so having a courage that I don't want to do a job and just focus on my YouTube is kind of like a something really big accomplishment thing for me, because like I am the kind of person who is actually like I don't want to leave my comfort zone. Okay, but I have that courage that I leave my comfort zone and I started doing this YouTube thing. So yeah, it is kind of like a something really that key big accomplishment for me, because of that key if I didn't really leave my comfort zone means like that key having a job, having a settled life and everything. So this is kind of like a something really a comfort zone,
and when you get in the comfort zone you will not grow. Okay, you will actually stuck at thing and just like. So for me is that ki, I don't know. Okay, for me is that ki, like just whatever. Okay, is a kind of like a thing, whatever. What is the next question? Is there anything in my spiritual walk with God that I would do better? Is there anything? Is there anything in my spiritual walk with God that I could do better? Is there anything in my spiritual walk? I didn't really understand this question. Is there anything in my spiritual walk with the God that I could do better? ओके, यानी ये कहने का ये मतलब है कि आप मर गए, ओके, और मरने के बाद आपकी जो आत्मा होती है वो आत्मा भगवान के पास जाती है या भगवान लेके जाते हैं, तब भगवान से आप क्या कहोगे कि मैंने लाइफ में कुछ बाकी था जो मैं करना चाहता था, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम करना चाहते हो मरने से पहले? माइट बी आई एम गेसिंग द क्वेश्चन रियली राइट, आई डोंट नो, but is that कि let me tell you one thing, death is come whenever it come. Okay, you can't predict that कि मैं अभी मरूंगा, कल मरूंगा, 50 साल बाद मरूंगा या 2 दिन में मरूंगा. You can't really predict anything. Okay, if you are care about yourself, care about your health and everything, yeah, that is good. But death is kind of like something really happened in just, okay, you can't control it. Okay, so so even if I did today I will not regret. Okay, even if I did tomorrow I will not regret at all. Okay, like basically ना, जब मरना आता है तो या ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट दैट थिंग कि हाँ मुझे मरना है, दैट ओके. बट मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने लाइफ को बिकम बेटर करने की कोशिश करूँगा, एंड आई वांटेड टू अचीव थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू. ऑलराइट, सो या, ओके, सो लाइक बेसिकली इज दैट कि अगर मैं किसी एक्सीडेंट पे मर भी गया, सो आई विल नॉट काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक दैट कि हाँ, ओके, लाइक डेथ इज डेथ. Okay, death is death. But if the God gave me a chance that ki हाँ you can survive again, so they can they can bring back my soul into my body again, then yeah, that is good. Okay, yeah, but death is a death. Okay, so yeah, you just like a life में आपको एक ही चांस मिलता है और इसी चांस में आपको पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ती है. So yeah, you have to accept that reality and go for it. Might be I'm guessing the question right, I don't know the question. The question is that is there anything in my spiritual walk with the God that I could do better? शायद इसका मतलब ये. What do you fear? Okay, क्या तुमको डर लगता है? Well, yeah, I scared of lot of things. Okay, scared about the futures. No, scared, not scared about future. I'm scared about the uh, like basically ना मैं डर जाता हूँ. Like when I started doing editing, okay, so जब मैं recording पे बैठता हूँ, after the recording I realized that कि dude यार मेरी recording इतनी अच्छी नहीं बनी यार. Okay, I can do it better. Okay, तो और बट मैं जानता हूँ कि मैं बेटर कर सकता हूँ, बट आई कांट लाइक आई वोंट डू इट एंड आई विल स्टार्टेड डूइंग एडिटिंग ना, तो तब मुझे डर लगता है कि यार वीडियो अच्छा नहीं बनेगा. ओके, सो कि ड्यूरिंग द एडिटिंग आई रियलाइज दैट कि यार वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है. ओके, सो या तब डर लगता है. सो यूजुअली आई ओवरकम दैट फियर इज़ दैट कि जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं किया, मैंने एडिटिंग अच्छा नहीं किया, तो आई जस्ट शिफ्ट डिलीट द एंटायर थिंग एंड स्टार्ट ओवर अगेन. ओके, क्योंकि नहीं बेसिकली ना चीज़ों को कभी कभी आप फिक्स करते समय जितना वक्त बर्बाद करते हो ना, उसी वक्त में आप एक नया रिकॉर्डिंग या नई रिकॉर्डिंग खड़ी करके आपको उसको एडिट भी कर सकते हो. ओके, लाइक इन माई प्रोसेस आई कैन डू दैट. ऑलराइट, सो यूजुअली वेन एवर आई फील समथिंग लाइक दैट कि हाँ मैंने कहीं पे फकअप कर दिया है, सो आई कैन स्टार्ट ओवर. ऑलराइट, सो दिस इज़ द फियर. ओके,
ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी जब व्हेन आई हैव अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली बिगर कम्युनिटी। वहाँ पे आपको एक प्रॉपर वीडियो देने का एक प्रकार लाइक बेसिकली ना व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अ सब्सक्राइबर एंड थिंग्स लाइक दैट, को आपको एक तरह से मेंटेन करना पड़ता है कि आप जिस तरह से वीडियो देते आ रहे हो वही उस तरह से वीडियो, उससे बेटर वीडियो देंगे। ओके, सो you have a lot of kind of like a responsibility and you just have to complete that responsibility. So yeah, so this is the kind of like a something really fear कि शायद मैं उस तरह की क्वालिटी ना अचीव दे पाऊँ जिस तरह से मैंने पहले दी थी। सो या बट माइट बी लाइक आई रियलाइज दैट ना कि हाँ चलो मुझे कहीं मुझे लगता है कि हाँ अच्छा नहीं हो रहा है, सो आई कैन स्टार्ट दिस थिंग। ओके, बट दिस इज द काइंड ऑफ लाइक अ फैक्ट दैट ये डर तो सबको ही लगता है। ओके या so this is the fear. Also I fear about lot of things. भूत डरावनी फिल्म से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ओके, आई एम शिडी स्केयर्ड ऑफ स्केयर्ड फिल्म्स। ओके, मैं मैं भूत की फिल्में थिएटर में नहीं देखता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे से देखना ही नहीं होता है ना, डैम स्केयर्ड डूड, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ओके, सो yeah, this is my fear. Okay, and there is a lot of fears too, a lot of fears means, but those are the fears as kind of like a something really that ki uh, just stagnant for a while. Okay, and then it's gone. Okay, it's not like that. All right, now next question is that ki what is your favorite thing about yourself? Favorite thing about myself, favorite thing about myself is that ki समटाइम्स ना आई कैन सी द अदर पीपल। ओके, दैट कि उनके पास बहुत कुछ होता है। ओके, लाइक दे हैव दिस, दे हैव दैट, दे हैव दिस। ओके, बट स्टिल दे गिव अप दैट मच इजीली। ओके, मेरे पास अभी भी ऐसे कुछ है नहीं। ओके, व्हेन आई रियलाइज दैट, व्हेन आई कंपेयर दैट पर्सन टू मी एंड आई रियलाइज दैट कि उसके पास जो चीज़ें हैं शायद मेरे पास होती तो आज मैं कहाँ पे कहाँ होता था, बट right now I don't have it. Okay, and when I see that thing कि वो लोग गिव अप कर रहे हैं लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, even if I didn't really have those things, that is kind of like a something really best thing about me। क्योंकि मैंने से बहुत लोगों को देखा है जो जिनके पास बहुत कुछ होता भी है। ओके, बट स्टिल दे गिव अप दैट मच इजीली। ओके, एंड व्हेन आई कंपेयर दैट कि हाँ मैं अभी भी ग्राइंड कर रहा हूँ, अभी भी तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे में ऐसे कुछ चीज़ है जो मैं गिव अप नहीं करता हूँ। सो दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली बेस्ट थिंग अबाउट मी। ओके, एंड आई वांटेड टू मेंटेन दैट थिंग। ओके, आई वांटेड टू मेंटेन दैट थिंग, बट समटाइम्स ना आई रियलाइज दैट ना कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है। ओके, क्योंकि लाइक वट एवर द थिंग्स दैट आई हैव, so right now I'm not respecting that, like basically मेरे पास एक घर है, मैं अपने पिताजी के घर पे रहता हूँ, मेरे पास एक रूम है। ओके, मेरे पास एक लैपटॉप है और मैं उसमें वीडियोस बनाता हूँ। ओके, some people don't really have that. ओके, बट स्टिल those people are doing this thing. ओके, तो और कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं होता फिर भी वो लोग ने का ऐसा काम कर जाते हैं जो लाइक समथिंग रियली दैट की अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। ओके, सो इट्स समथिंग रियली दैट कि आप कौन से स्केल से देख रहे हो। ओके, आप 1 से 2 को देख रहे हो तो ऑब्वियसली 2 इज़ एक्चुअली हायर दैन 1। तो आप सेकंड पोजीशन पे हो तो आपको लगता है कि शायद 1 पोजीशन आपसे नीचे है, बट व्हेन यू लुक राइट यू रियलाइज दैट कि 3 पोजीशन आपसे ऊपर है। ओके, सो यू आर एक्चुअली गोइंग फ्रॉम स्केल टू स्केल टू स्केल। ओके, एंड यू डोंट नो दैट कि आप मिलियन पे भी हो तभी भी आपको रियलाइज़ होता है कि शायद आपके ऊपर कोई तो खड़ा है। ओके, सो बेसिकली इज दैट कि it's a kind of like a race. Okay, you are going from one position to another, and it's a kind of like a path to infinity. Okay, you don't know what is your capability, it's actually meant to you कि आप में कितनी क्या है, ओके आप में कितना दम है और आप कितना ऊपर जा सकते हो। ओके, बट समवन विल ऑलवेज बी अपस्टेयर। ओके, कोई ना कोई तो होगा जो आपसे भी बड़ा होगा। सो it's kind of like a thing. Okay, बट इट्स जस्ट लाइक दैट ना कि
when I like about myself is that yeah, not to give up okay things, and I have positive mindset. Yeah, uh, I have positive mindset. Okay, like basically, I seen the people they are going very negatively at some certain point, but I don't. Okay, I have very positive mind that the things that I wanted to do, I will do it very positively. So yeah, I just like that is good. All right. So what do you like? Do you okay? What do you like to do in the free time? What do you like to do in a free time? Uh, Free time. Well, yesterday I recorded my video, and after that, I don't wanted to record another video. I complete my video, title, thumbnail, everything, and I don't wanted to record another video. So I have free time, so I watch movie. Okay, but usually is that कि फ्री टाइम मेरे लाइफ में लाइक फ्री टाइम व्हाट इज़ रियली फ्री टाइम मीन्स लाइक दैट कि हाँ चलो अभी तेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम है जो कम्प्लीटली फ्री है दैट यू कैन डू एनीथिंग ओके लाइक बेसिकली ना फ्री टाइम और ब्रेक में फ़र्क होता है ओके फ्री टाइम में क्या होता है कि आपके पास पूरा काम ख़त्म हो गया है आपका और आप अभी रिलैक्स कर रहे हो सो दैट इज़ कॉल्ड फ्री टाइम और ब्रेक टाइम होता है जहाँ पे आप काम को बीच में छोड़ के थोड़ी देर का गैप लेते हो एंड देन you start this thing again okay so usually I get break a lot okay मैं ब्रेक लेता हूँ ओके बट मेरे पास फ्री टाइम यूजुअली आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीट तो उसके बाद जितना भी वक्त लगता है एक दिन को ख़त्म करने के लिए उतना एक फ्री टाइम रहता है बट उस वक्त में भी मैं गेम खेलता रहता हूँ या ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से मुझे कंटेंट बना और उस कंटेंट के हिसाब से मुझे गेम खेलना पड़ता है देन आई अंडरस्टैंड कि मैकेनिक्स क्या है वगैरह वगैरह सो या सो यूजुअली आई नॉट रियली गेट दैट मच फ्री टाइम ओके ब्रेक तो मैं लेता हूँ ब्रेक इज़ रियली एसेंशियल but what do you do in the free time okay there is no specific thing that I can do this is no it's not like I can do a lot of things okay कभी मैं फिल्म देख लेता हूँ या यूजुअली वॉच फिल्म और समथिंग दैट कि या मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म ही होता है ओके चलो अभी खाली वक्त है तो चलो अभी ऐसा नहीं है कि चलो खाली वक्त है तो दोस्तों से मिलने जाते हैं ओके इवन इफ़ यू हैव फ्री टाइम डजंट मेक यू दैट कि तुम्हारे दोस्तों के पास भी फ्री टाइम है नो इट्स नॉट ओके सो दोस्तों से मिल लेता हूँ ये तो कभी ऐसे फ्री टाइम होता ही नहीं है ओके यूजुअली लाइक फ्री टाइम तो बस मूवी देख लेता हूँ ओके क्योंकि लेटली आई रियलाइज दैट कि आई वॉज नॉट रियली वॉचिंग मूवी दैट मच सो आई डोंट नो पहले मैं बहुत ज़्यादा फिल्म देखता था दूर बहुत ज़्यादा अभी तो हफ्ते में शायद एक बार मिल गया तो मिल गया ऑलराइट ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन what are your values I already explained this thing okay in the end ना सारे questions का meaning एक ही होता है okay what are your values and things like that and everything but still I just everything like every question is actually come with a different way of explaining things okay end में result तो एक ही होता है so what is your value okay so value means like that let me tell you one thing value यानी क्या होता है value यानी जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ती है ओके लाइक लाइफ में वैल्यू बढ़ती है व्हाट इज दैट लेट मी एक्सप्लेन टू यू अगर आपको रास्ते पे चलते आपको एक भिखारी दिख जाता है ओके क्या आपके मन में उस भिखारी के लिए कितनी वैल्यू है 10 आउट ऑफ कितना 10 आउट ऑफ 1 10 आउट ऑफ 2 मे बी या अगर आपको एक बंदा है जो मर्सिडीज चला रहा है तो उसके तो आपके मन में उसके लिए कितनी वैल्यू होती है 10 आउट ऑफ 8 10 आउट ऑफ 9 मे बी राइट so usually value defines that ki how much you have not about the money but about the everything okay money is a part of the value okay money is part of the value there are so many values okay एक होते हैं money यानी पैसा okay फिर आता है करियर ऑलराइट फिर आता है रिलेशंस ओके
फिर आता है इमोशंस. ओके, and there are so many values too, like a spiritual values and then lots of values too. I don't want to talk about such thing because most of people don't really not that believe. So let's talk about most of the people really want is that money. Okay, हाँ पैसा एक वैल्यू है और आपको ये अचीव करना ही है ऑब्वियसली. वो बंदे ने जो मर्सिडीज चला रहा था वो मर्सिडीज उसने फ्री में नहीं खरीदी है, उसने उसने उसके लिए पैसा दिया है, उसके बाद ही उसको मर्सिडीज मिली है. सो ऑब्वियसली मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो आपके लाइफ में जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग है उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए आपको पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है. और हाँ पैसा इम्पोर्टेंट है बट लाइक इट्स नॉट फुल्ली इम्पोर्टेंट. ओके, क्योंकि ये पूरी तरह से एक तरह से वैल्यू नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू. ओके, फिर आता है इमोशन. इमोशन यानी आपके इमोशंस कैसे हैं. ओके, समटाइम लाइक बेसिकली कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं बट दे फील रियली सैड. बट कुछ लोग ने क्या बहुत ज़्यादा लाइक दे आर नॉट दैट मच काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली हाउ, उनके पास उतना पैसा नहीं होता बट स्टिल दे आर वेरी इमोशनली वेरी हैप्पी. ओके, so emotionally happy is actually depends on the things which actually happen like सराउंडिंग में क्या है, आपके लोगों के साथ रिलेशंस क्या है वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें बाउंड अप हो जाते हैं, रिलेशंस इमोशंस ये सारी चीज़ें भी बाउंड अप हो जाती है. इमोशनली हैप्पी मीन्स लाइक दैट कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली योर नेचर. ओके, आपको नेचर कैसा है, यानी अगर आपको अंधेरे में स्माइल करना आता है तो ऑब्वियसली यू आर एक्चुअली वेरी गुड इन दैट. बट आपको हमेशा रोते हुए रहता है, आपको पूरे दिन में भी आप रोते हुए रहते हो, सो इट डजंट रियली मेक दैट सेंस. ओके, सो हाँ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको प्रिपेयर रखना पड़ता है कि what is the worst thing happen, it happened. Okay, this is a part of the life and you are going through ups and downs, so you just have to go through that. All right, but कुछ लोगों में एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि whenever they have something really very sad moment but still they are actually going through lot of stuffs but still they happy, still they have a smile inside their face. So that is good. Okay, that is kind of like a very big thing. Do I have that kind of like a something really emotions? Well, right now yes. Okay, because right now I'm not emotionally bounded with anything at all. अभी तो मेरा बस एक ही गोल है कि मैं पैसा कमाना है, करियर है. बट व्हेन यू आर रिलेशन विथ एनीवन एल्स, ओके, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैटर करनी पड़ती हैं. एंड राइट नाउ द करियर इज़ रियली नॉट दैट, करियर भी उतना ज़्यादा ये नहीं है क्योंकि लाइक बेसिकली ना अगर आप लाइक द करियर मीन्स लाइक दैट कि आप ये नहीं सोचे कि मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, दिस इज़ माई करियर. नो, इट्स लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली नॉर्मल काइंड ऑफ लाइक अ थिंग. ओके, बट जब आप बड़े हो जाते हो like when you are kind of like a something really earning lots of money, so when you have lots of money you have lots of responsibility too, and having that responsibility you have fulfilling that responsibility. Okay, in the career too, क्योंकि करियर में आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ता है. ओके, तो या इमोशनली इज़ ऑल्सो रियली हैप्पी. ओके, क्योंकि ऑफिस कल्चर में या करियर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका इमोशन डाउन हो जाता है बट स्टिल इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट कंडीशन, सो दैट इज़ गुड. रिलेशन इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के साथ रिलेशन कैसे इस तरह से मेंटेन करते हो. ओके, हैविंग अ वैल्यू विथ योर रिलेशनशिप. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप में लव एंड थिंग्स लाइक दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप विथ ऑल दोस पीपल लाइक अ फ्रेंड, parents, people, obviously wife and girlfriend is also really essential thing. Okay, but those relations is also really important because those are giving you value. Okay, ये एक तरह से वैल्यू ही होता है. ओके, तो या फिर उसके बाद आता है करियर. या करियर इज़ ऑल्सो रियली एसेंशियल. करियर में भी आपको एक वैल्यू मिलती है. हाँ, बट यू हैव टू चूज़ दैट कि विच करियर दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ओके, कभी कभी आपको क्या होता है कि कभी कभी आप बहुत सारा पैसा कमा लेते हो बट बहुत सारा पैसा इलीगल तरीके से कमा लेते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है. ओके, लाइक बेसिकली कोई आतंकवादी होता है तो आपके मन में आतंकवादी के लिए जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम ही होती है बिकॉज द whatever the money that he earn from really wrong way. ओके, सो यूजुअली जो लोग पैसा कमाते हैं गलत तरीक़ों से लोगों के मन में उसके लिए उस बंदे के लिए वैल्यू कम होती है. ऑलराइट, बट इफ़ यू आर एक्चुअली अर्निंग मनी इन रियली राइट वे तो ऑब्वियसली लोगों के मन में आपके लिए एक तरह से रिस्पेक्ट बढ़ता है. ओके, रिस्पेक्ट वैल्यू यू बोथ आर द सेम थिंग्स. ऑलराइट, सो
for me uh, what is exactly the value, यानी मेरे values क्या है कि कौन like what is exactly like value, यानी कि मेरे values क्या है कि uh, like yeah, I wanted to earn money. Yeah, money is really essential. I wanted to balance between all those things. Okay, like basically क्या होता है ना, आई कांट से कि मुझे ये भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, पैसा भी चाहिए. नो, यू कांट डू दैट. ओके, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी आप करियर भी चाहिए. यू लाइक व्हेन यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्टफ, यू वांटेड टू अचीव दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, बट आपके पास उतना वक्त नहीं रहता यार. ओके, कभी कभी आप पैसा बहुत कमा लेते हो, बट पैसे कमाने के चक्कर में आप रिलेशनशिप को वक्त देना ही भूल जाते हो. So you just actually gain a lot of money, but simultaneously you are actually losing some sort of a bar on relationship or emotions too. So yeah, so करियर एंड पैसा एक तरह से कोइंसाइड होते हैं, एक तरह से कनेक्ट होते हैं. ऑब्वियसली आपका करियर बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ता है, but emotions and relationships are also really coincide. Okay, but and both are really vice versa. Okay, अगर आप करियर मनी पे ज़्यादा फोकस करोगे तो इमोशन हैप्पीनेस कम हो जाता है. अगर इमोशन हैप्पीनेस पे कंट्रोल करोगे या उसको ज़्यादा ये करोगे तो पैसे पे थोड़ा ये होता है. सो एज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, क्योंकि लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल. देयर इज़ अ गाय हु इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक अ 14 आवर इन डे. सो बेसिकली उसके पास वक्त ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है उसको वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो you understand na. So you have to balance between the values. Okay, paisa, career and things like that. Yeah, and I want all those value, paisa, emotions and everything, but I also wanted to balance between all those things. Okay, and I can't say that कि मुझे सब कुछ चाहिए. हाँ, मैं चाहूँगा कि सब कुछ मिलेगा मुझे, बट हमारे लाइफ में उतना वक्त नहीं है कि एक ही लाइफ में हम ये सारी चीज़ें अचीव कर पाए. ओके, so it's a lot of things too. All right, so it's almost like a 37-minute I talk about, and I talk about really good questions at all, and I just realized that ki haan, it's really great. All right, so this is it. This is the end. This is the my artifact episode number 2800. What do you do after this artifact episode? I wanted to record my gameplay car for sale simulator. In this game I wanted to took the challenge that I have millions of dollar. I have to spend that dollar, spend entire money to zero. So yeah, I can do that. All right, this is it. Thank you.